Hello dear students, welcome back to your biology class, and we were on the chapter number 6, that is photosynthesis, and we have already completed the first part, and today we'll starting with the second part of the chapter. And those who have not seen the first part, I'll give the link in the description box so that you can go through it before starting the second part so that you can understand better. Now let's discuss what we have completed in the first part and what we are going to discuss in this second part. So in the first part we have studied about the main process, its importance, and raw materials which are required for the process of photosynthesis, and how the closing and opening of stomatas will be controlled by potassium ion theory and sugar molecule theory, and what are the different kinds of adaptations leaves are having for the maximum photosynthesis. So that red portion we have already completed in the first part, and now in the second part we are going to discuss about the mechanism of this process of photosynthesis and the factors affecting the rate of the photosynthesis, and the last two topics we will complete in the third part. So now let's revise once again what is the process of photosynthesis. This is the process by which the green plants having chlorophyll molecule or pigment, they will trap the sunlight energy and they will convert that sunlight energy into the chemical energy called as starch. So now how they will do it? They will use the raw material carbon dioxide that they will absorb through the stomatas of their leaves, and they will absorb the water as also a raw material from the roots. Now in the presence of sunlight, that chlorophyll molecule in the chloroplast, it will convert the photon light energy into the chemical energy, and then by utilizing that energy they will synthesize the sugar molecules, and in this process the oxygen will be given off to the air as a byproduct. Now that sugar molecules will then be stored in the form of starch in the leaves. Okay, so now place of the photosynthesis is that in the plant cells, basically the principal site of photosynthesis is the mesophyll tissues present in the leaves. Okay, and that mesophyll tissues, to that mesophyll tissues water is transported, and even the stomatas will absorb the carbon dioxide, and in these mesophyll tissues they are having chloroplast as a plastid. So the main kitchen of the mesophyll cell is the chloroplast molecule. Okay, so by using the sunlight energy and the carbon dioxide in water in the presence of chlorophyll, now here the carbon dioxide will be converted into the sugar molecule. Now this process of photosynthesis is divided into two main phases that we have already discussed in the previous part. That first is light reaction, that will happen in the grana portion, or we can say the thylakoid of the grana portion, and the second part is the dark reaction. Dark reaction will happen in the lumen portion, that स्ट्रोमा पोर्शन, ये जो ल्यूमन है जहाँ पे फ्लूइड फिल्ड होता है स्ट्रोमा, that in that stroma region the second phase dark reaction will happen. So in this part we will discuss about the light reaction and dark reaction in detail. What are the phases and where they will occur and what will happen in these reactions. Okay, so now let's discuss the mechanism of photosynthesis. So we have discussed that it is divided into two phases, light reaction and dark reaction. Light reaction is having one more other name called as Hill's reaction. Okay, and dark reaction is also called as Calvin cycle on the basis of the names those who have discovered it. Okay, so you need to learn the second names also, because sometimes the differences may be asked as per the difference between Hill's reaction and Calvin cycle, and question may ask difference between the light reaction and dark reaction. So now let us see what is happening in light reaction and what is happening in dark reaction. So basically in this process, in the light reaction, light is the major part. Means light is very important in the light reaction. As the name indicate, it is a light reaction. So first of all, in the thylakoid membrane of the chloroplast, it is chloroplast, and these are the grana portion in which the thylakoids are arranged like a stack of coin. So in the thylakoid membrane we have discussed that chlorophyll pigment, that photochemical pigment is present in the membrane of the thylakoid. So first of all, here the chlorophyll molecule will absorb the light energy in the form of photons.
Okay, photons क्या होते हैं? That is the smallest unit of the light energy. So they will absorb the light energy in the form of photon, and then by using that light energy, and we can say by using those photons, some of the electrons here will get excited, and then they will split the water molecule, and they will use those energy to produce those packets of energy called as ATP and NADPH. ओके यहाँ पे लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी के पैकेट्स जनरेट होते हैं. इस सोलर एनर्जी को यूज़ करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं पहले वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, फिर इस लाइट एनर्जी को यूज़ करके इनको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. सो लाइट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, the solar energy will be converted into the chemical energy. Okay, and in this process, in addition to the light, even water molecule is also very very necessary. Means यहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी को यूज़ करके वाटर को तोड़ के इससे भी एच आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है, एंड फाइनली द ADP here will be converted into ATP and NADP will be converted into the NADPH. ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि लाइट रिएक्शन में लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसको स्प्लिट करके इसके एच आयंस को यूज़ करके NADPH बनाया जाता है, और ये जो लाइट एनर्जी से जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं इसको यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ADP को ATP में कन्वर्ट किया जाता है, और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन भी बाहर रिलीज आउट होती है. ओके, क्योंकि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किससे होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन एडेड होती है वो अब अलग हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी. ओके, अब लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, प्लांट्स ने केमिकल एनर्जी के पैकेट्स बना लिए हैं. अब क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगी. डार्क रिएक्शन को अब हम क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल. सो दिस लाइट रिएक्शन विल अकर इन द that thylakoid of the grana, and this Calvin cycle will occur in the stroma region. सो स्ट्रोमा रीजन में अब क्या हुआ कि ये जो लाइट रिएक्शन की हेल्प से ये जो एनर्जी के पैकेट्स बनाए गए हैं, अब इन एनर्जी के पैकेट्स को यूज़ किया जाएगा. नाउ दिस chloroplast will absorb the carbon dioxide and it will use those energy packets, and then it will convert this carbon dioxide into glucose. So we can say that this is that light dependent reaction, or light reaction is a photochemical phase क्योंकि इसमें photons को यूज़ किया जाता है, and this dark reaction is called as biosynthetic phase क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसाइज होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में. सो इट इज़ फोटोकेमिकल फेज एंड दिस इज बायोसिंथेटिक फेज. ओके, दिस इज लाइट रिएक्शन एंड दिस वन इज डार्क रिएक्शन. हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट डार्क रिएक्शन डजंट मीन दैट इट विल अकर ओनली इन द डार्क, मीन्स नाइट में होती है. नो, डार्क रिएक्शन विल साइमल्टेनियसली अकरिंग विद द लाइट रिएक्शन, ओके, विदाउट एनी गैप. Means the gap will be less than 1,000 of a second. ओके, जैसे ही लाइट आई और प्लांट ने ये जो केमिकल एनर्जीज बनाई, तो जस्ट उसी टाइम पे इस केमिकल एनर्जी को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना लिए जाएंगे. सो वी कैन से डार्क रिएक्शन बोलने से ज़्यादा बेटर है वी शुड से इट इज़ अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अकरिंग इन द लाइट पार्ट, बट इट डजेंट नीड लाइट. इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है. लाइट रिएक्शन में सनलाइट की बहुत ज़रूरत है, बट इट इज़ अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. तो डार्क रिएक्शन एक पुराना वर्ड है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट, बट वी कैन से in place of dark reaction the most appropriate word is to use it as a light independent reaction. Okay, so this is an overview. Now we will discuss in detail that how it is all happening. Okay, now come to the mechanism in detail. So we have discussed that the full mechanism is divided into two phases, that is light reaction and dark reaction. Light reaction में क्या क्या होता है, सबसे पहले लाइट एनर्जी पड़ती है तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में अबंडेंट ऑफ एनर्जी होती है. उस एनर्जी को यूज करके ADP को ATP में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोटो फोस्फोराइलेशन.
फोटो फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, फोटो यानी लाइट की प्रेजेंट में फोस्फोराइलेशन कर दिया, क्योंकि एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और जब उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा एटीपी। सो फोस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन द एडिनोसिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, सो यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हुआ है, फिर उसके बाद में हुआ है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को भी तोड़ा गया है, और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगी, और जो एच आयन और इलेक्ट्रॉन्स है उनको यूज करके एनएडीपी का रिडक्शन कर देंगे, एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देंगे। एंड we can say now that in the light reaction ADP से ATP जनरेट होगा और NADP से NADPH जनरेट होगा, means the byproduct of the light reaction is generation of ATP and NADPH by photolysis of water and by excitation of chlorophyll molecules. Then in the dark reaction, by using those energy packets, carbon dioxide will be converted into glucose molecule. Okay, so let us discuss in detail the light reaction, steps of light reaction. First of all, what will happen? The chlorophyll molecules will absorb the light in the form of the photon and they will get activated and they will emit the electrons. और ये जो free electrons होते हैं उनके पास में काफ़ी एनर्जी होती है, एंड ये एक के बाद एक जंप करते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करेंगे, और जब ये जंप कर रहे होंगे, मूविंग कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, एट दैट टाइम दे विल रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी को यूज़ करके जो एडीपी मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर फोस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाएगा, और अब ये एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एटीपी सिंथेज। ओके, सो अभी क्या हुआ है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर लाइट आई है, वो एक्साइटेड हो गए, इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने एमिट किए हैं, और उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करके जो मेम्ब्रेन के अंदर ये एटीपी सिंथेज जो एंजाइम था उसने क्या किया, एडीपी को कन्वर्ट कर दिया एटीपी में। सो लाइट रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप इज एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड द सेकेंड स्टेप इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। Photophosphorilation means the conversion of ADP, adenosine diphosphate, to adenosine triphosphate. Okay, here there will be an addition of phosphate group by using that energy. Okay, so these are the two steps. Now come to the third step, that is photolysis. फोटोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना. फोटो मीन्स अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोलाइसिस? दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. मीन्स हियर द वाटर विल बी ब्रोकन डाउन इनटू हाईली रिएक्टिव H ions प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड आउट. यानी वहाँ पे क्या होता है, यही लाइट क्या करती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक डाउन कर देती है और रिलीज करती है हाईली एक्टिव H ions प्लस ऑक्सीजन जो इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है उसको बाहर एमिट कर दिया जाएगा और इन H आयंस को और इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया जाएगा. और इसको कहाँ यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP to NADPH. Okay, what is the meaning of NADPH? NADPH means nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Okay, so this is also a chemical energy packet. Just like ATP को हमने हमेशा पढ़ा है energy packet होती है, NADPH is also an energy packet. Okay, so here there will be a reduction. यानी ये जो inactive form है इससे इसको active form में convert किया जाता है by reducing it to the NADPH. और इसको reduce करने के लिए electrons की और जो H ions की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आती है? By the photolysis of water molecule. ओके, सो स्टूडेंट्स आई थिंक इट इज अंडरस्टूड नाउ कि लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्या हुआ, लाइट आई, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन उसमें से एमिट हुए. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं. इस एनर्जी को यूज करके जो इनएक्टिव एडीपी है उसको एक्टिव एटीपी में कन्वर्ट कर दिया गया है. और जो इसके साथ साथ क्या हुआ है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हुआ है लाइट एनर्जी से. और उस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर से जो H आयंस निकले हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं इनको यूज करके जो NADP है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है NADPH में. ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन. और बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे लाइट रिएक्शन के? ATP एंड NADPH, एक्टिवेटेड एनर्जी मॉलिक्यूल्स. ओके, सो नाउ कम टू द dark reaction. Now by using those NADPH and ATP,
नाउ व्हाट विल हैपन इन द स्ट्रोमा रीजन, बायोसिंथेटिक फेज होगा, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रोमा रीजन के अंदर लाइट रिएक्शन के जस्ट बाद में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अब क्या होगा, वो जो एनर्जी पैकेट्स दोनों मिले हैं लाइट रिएक्शन से, एटीपी एंड एनएडीपीएच, उनको यूटिलाइज किया जाएगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी इसको फिक्स कर दिया जाएगा बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। और ये पूरी जो सीरीज ऑफ रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल। इन योर हायर सेक्शंस यू विल स्टडी अबाउट कैल्विन साइकिल इन डिटेल। हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली दिस थिंग कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाता है एंड नाउ इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, एटीपी एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल, एनएडीपीएच एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल जो हमें ऑलरेडी कहां से मिल चुके हैं, लाइट रिएक्शन से, प्लस एन एंजाइम कॉल्ड एज रुबिस्को. It is very important enzyme. Without this enzyme, carbon dioxide will not get fixed into the glucose molecule. Okay, so what is rubisco? Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase. Okay, this is the full form of rubisco molecule and you need to learn it because it may be asked in your examination. Okay, it is an important abbreviation, you need to learn it. Okay, and in addition to abbreviation rubisco, NADPH और ATP, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. ATP means adenosine triphosphate and NADPH means that nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. You need to learn all these abbreviations. Okay, so here in the dark reaction it is not given in very detail. You need to learn only this thing कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं और फिक्स कर देते हैं थ्रू द कैल्विन साइकिल एंड दिस फिक्सेशन नीड एन एंजाइम कॉल्ड एज रुबिस्को एंजाइम. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में फिक्स करने के लिए जो एनर्जी पैकेट्स चाहिए होते हैं वो हमें मिलते हैं लाइट रिएक्शन से एंड दोज एनर्जी पैकेट्स आर एटीपी एंड एनएडीपीएच. Okay, now and one more important thing here you need to understand is कि जो डार्क रिएक्शन है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो डार्क में या नाइट में होती है, ये साइमल्टेनियसली चलती है दिन में भी, बट इट इज एन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. मीन्स इसको लाइट की जरूरत नहीं है. जैसे ही इसको सनलाइट से लाइट रिएक्शन के बाद एनर्जी पैकेट्स मिलेंगे ये कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगी. ओके, now here one more overview of the mechanism is given that in the leaves, in the chloroplast, first of all the chlorophyll molecule will absorb the light. Okay, and then it will absorb the water from the roots and what will happen, it will convert those NADP and ADP into NADPH एंड एटीपी. और अब इन एनर्जी पैकेट्स को यूज करके स्ट्रोमा रीजन में क्या होगी, कैल्विन साइकिल होगी. कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा शुगर मॉलिक्यूल में. ओके, और इस लाइट रिएक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ है उसकी हेल्प से NADPH बन गया है और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल गए हैं. सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है वो कौन सी रिएक्शन में होता है, लाइट रिएक्शन में. और जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन में ऑक्सीजन एमिट आउट होती है, दैट ऑक्सीजन विल ऑल्सो एमिट आउट इन द लाइट रिएक्शन. ओके, now the next is topic is factors affecting the rate of photosynthesis. Now just like transpiration, here also the rate of photosynthesis will be affected by both external factor and internal factors. Okay, external environmental factors includes the intensity of light, the concentration of carbon dioxide, appropriate temperature and availability of water. And internal factors means the presence of chlorophyll molecule, structure of leaf and protoplasm. So let us discuss first of all the external factors. Light intensity. Obviously the rate of photosynthesis increases with an increase in light intensity that we have already discussed in the factors affecting rate of transpiration. There we have already discussed कि intensity बढ़ती है तो साथ साथ में transpiration भी बढ़ता है और even the stomatas are open, then it will also leads to increase in the rate of photosynthesis. Okay, now the next is carbon dioxide. The rate of photosynthesis increases with the increase in the concentration of carbon dioxide. So in the atmosphere, we know that concentration of carbon dioxide varies from 0.03 to 0.04%. Okay, so up to
फ्रॉम 0.02%, जैसे जैसे वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी धीरे धीरे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी अप टू 0.05% इट विल इंक्रीज. बट उसके बाद में क्या होगा, एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा एंड आफ्टरवर्ड्स इट विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, सो ऑप्टिमम इज फ्रॉम 0.02 to 0.05%. Next is temperature. The best suitable temperature for the process of photosynthesis is 35 डिग्री. ओके, और इसके बाद में अगर और आगे एक्सीड होता है तो 40 डिग्री तक ठीक है, बट 40 डिग्री से भी और आगे बढ़ गया तो जो एंजाइम्स है, रुबिस्को एंजाइम्स एंड एटीपी सिंथेज एंड अदर एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे ऑल विल गेट डिस्ट्रॉयड. सो द सुटेबल टेम्परेचर इज द 35 डिग्री सेल्सियस ओनली. ओके, इससे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तब भी जो एंजाइम्स है वो डिग्रेड हो जाएंगे, और अगर इसी से और बहुत ज़्यादा लो हो गया टेम्परेचर तब भी जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है. सो दे विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, सो इट विल ऑल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, सो here we can say that for light intensity and for carbon dioxide it is a linear graph, means with the increase in the light intensity the rate of photosynthesis increase, but at the saturation point now it will not affect. Okay, because जो optimum light intensity है वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है, बट इन जनरल वी कैन से कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ में जो फोटोसिंथेसिस है वो बढ़ेगा. बट अगर बहुत ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगी, बिकॉज इट विल लीड्स टू ब्लीचिंग द क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्लीच हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे. then very high light intensity is not good, but at an optimum range बढ़ती जाएगी और उसके बाद में ये linear हो जाएगा. At a saturation point it will get linear. Okay, and the same will happen with the carbon dioxide. 0.02 से increase होगी, 3 पे होगी, 5 पे होगी, but 5 के बाद में फिर से saturation point आके ये linear हो जाएगा. But in the temperature the peak will be at 35 to 40 degree Celsius, but उससे भी आगे exceed होने पे rate of photosynthesis will be reduced. Okay. Now the next factor is water. Water is rarely a limiting factor because जितना भी पानी plant absorb करता है उसमें से less than 1% they required for the process of photosynthesis. Okay, so water is easily available. Okay, and it is not at all a limiting factor for the process of photosynthesis. Now the next is internal factor. First one is chlorophyll molecule. So chlorophyll molecule, we know that loss of chlorophyll molecule will reduce the trapping of energy, because we have studied कि chlorophyll molecule क्या करते हैं, वो sunlight को trap करते हैं in the form of photons. Okay, so sometime it may happens that if there is an inadequate amount of nutrient or there is a scarcity of minerals, then it will cause a loss of chlorophyll in the leaves, and then it will reduce the rate of photosynthesis. Okay, so appropriate amount of chlorophyll molecules are must for the rate of photosynthesis. Next is structure of leaf. So if the leaves size is small, then it will influence the amount of light entering in the leaf. Okay, and if the number of stomata present on the leaf are very less, then also these means amount of carbon dioxide which is going through the stomata, that it will affect the rate of photosynthesis. Okay, so we can say that size and thickness of leaf will also affect the rate of photosynthesis, because they will influence the amount of carbon dioxide and the light entering into the leaf. Okay, now the next is protoplasm. Protoplasm means that living portion or living part of the every cell of leaf. Okay, so anyhow, if there is a high amount of sugar and starch will get accumulated in the leaf, then also it will reduce the rate of photosynthesis, because it will leads to feedback inhibition. What do you mean by feedback inhibition? Means अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा बनता है, so वो मॉलिक्यूल खुद ही अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है. You will study about that feedback inhibition in detail in your next chapters. Okay, so here you need to understand कि अगर बहुत ज़्यादा already sugar molecules or starch present in leaves में, so then also it will reduce the rate of photosynthesis, and even the protoplasm के अंदर water के molecules कम है और उसका dehydration हो चुका है, then also it will reduce the rate of photosynthesis. So for the rate of photosynthesis, Blackman's principle was also given by a scientist called as Blackman. So named Blackman, sorry. So उसने क्या बोला, उसने बताया कि the optimum conditions क्या है कि जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.03 से
0.05% के बीच में है, लाइट इंटेंसिटी अच्छी है, और अगर टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक है तो बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, इट विल लीड्स टू मोर फोटोसिंथेसिस। एनी हाउ, अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टिमम है, बट टेम्परेचर एकदम से लो हो गया है, देन ऑल्सो इट विल लीड टू लेस फोटोसिंथेसिस। और अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही कम है जो कि एज अ रॉ मटेरियल काम आती है, और टेम्परेचर ऑप्टिमम है, देन ऑल्सो इट विल लीड्स टू लेस फोटोसिंथेसिस। लाइट इंटेंसिटी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, बट अगर इंटेंसिटी नहीं है तो एनर्जी की जो फोटोन्स की कमी हो जाएगी, देन ऑल्सो इट विल लीड्स टू लेस फोटोसिंथेसिस. So these are some of the factors which will affect the rate of photosynthesis. Okay, so now here we have completed the mechanism of photosynthesis and the factors which will affect the rate of photosynthesis. Next two topics means the carbon cycle and the experiments regarding the process of photosynthesis that we will complete in the part third. Okay, so please go through the chapter, read the chapter carefully, and ask me if you have any doubts, and solve your book exercise. And in this chapter, the structure of chloroplast is an important diagram. It may come in exam for drawing also, so practice that diagram and make a good notes of this chapter. Okay, thank you so much.